Good evening, ladies and gentlemen. Cyclone Biparjoy has made the landfall in Gujarat, and according to the IMD, the process is expected to continue till midnight. Huge impact of the cyclone is being witnessed in parts of Gujarat, including the coastal areas of Jakhau, Kutch and Morbi. It's a very severe cyclonic storm with maximum wind speeds reaching up to about 150 kilometers per hour. The region is battered with heavy rains and powerful winds. Meanwhile, over 1 lakh people have been shifted to safer locations, and several columns of Army, Navy and the NDRF teams are on alert to tackle the situation. Let's take a look at these ground reports from Jakhau, Kutch and Mandvi regions. But before we go across to those reports, going across live to our reporter Rakesh, who joins me live from Nalia, also Siddharth, who's joining me live from Mandavi. Rakesh, to you first. You're low on battery, no electricity anywhere around you. You can't charge your phones और your camera batteries. क्या सिचुएशन है? शाम बल्कि दिन से आप रिपोर्ट कर रहे हैं कि तबाही के काफी सीन्स नजर आ रहे हैं. इस वक्त क्या दिख रहा है? बिल्कुल, इस वक्त हालात यहाँ पर काफी मुश्किल है. नालिया के आउटर साइड पर मैं हूँ और मेरे बाईं और सामने की ओर जो सड़क है ये सीधे जखाऊ पोर्ट तक जाती है. यहाँ से करीब 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर. लेकिन आप देखिए हवाओं की रफ्तार अभी भी बहुत ज्यादा, और इतनी ज्यादा कि उसके थपेड़े इस पेट्रोल पंप के शेड को पूरी तरीके से तहस तहस करने पर आमादा है. काफी हिस्सा इस पेट्रोल पंप के शेड का टूटकर नीचे गिर चुका है. सबसे पहले पंकज आप इधर तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से ये जो पहला डिस्पेंसर है इस पेट्रोल पंप का वो क्षतिग्रस्त हुआ है, और उसके नीचे ये शेड का हिस्सा टूटकर गिरा है. इसके साथ ही जहां तक आपकी नजर जाएगी इसके नीचे जाना खतरनाक है, खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ऊपर की ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से शेड के हिस्से हवा के थपेड़ों की वजह से टूटकर कमजोर हो रहे हैं. बिल्डिंग टूट चुकी है, पेच इसके ढीले हो चुके हैं. ये नीचे का हिस्सा बीच का डिस्पेंसर भी करीब करीब क्षतिग्रस्त हो चुका है. इसके साथ ही पेट्रोल पंप के दूसरे हिस्से में ये आपको तस्वीरें नजर आएंगी कितनी दूर तक शेड टूटकर नीचे गिरा है. ये एक डिस्पेंसर कुछ ठीक हालत में बचा है. हालांकि जहां भी शेड टूट रहा है, गिर रहा है, बीच बीच में हवा, और उसके बीच में आप ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से हवा के तपेड़े बार बार इसके शेड टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं. हवाओं की रफ्तार यहाँ पर करीब 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं, और कच्छ का ये पूरा इलाका सबसे ज्यादा संवेदनशील. ये अलग बात है कि यहाँ पर जो रिहाइश है लोगों की वो काफी दूर दूर पर है, करीब 15-20 किलोमीटर के आसपास. लेकिन उतनी ज्यादा इस कंडीशन में टफ हो गया एजेंसीज के लिए उन लोगों को इवैक्यूएट करना, उन लोगों को सुरक्षित करना. कच्छ के पूरे इलाके में अगर हम पूरे गुजरात की अगर बातचीत करते हैं तो जितने लोग इवैक्यूएट किए गए हैं, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए हैं, उनमें से 80% लोग अकेले कच्छ के ही हैं. यानी आप समझ सकते हैं कि किस हद तक कच्छ का ये इलाका ये पूरा संवेदनशील है. आज पोर्ट को काफी पहले 2 दिन पहले खाली करा लिया गया था, क्योंकि जखाऊ पोर्ट के आसपास का इलाका सबसे ज्यादा प्रभावशाली माना जा रहा था कि वहां पर सबसे ज्यादा इसका असर. यहाँ पर घुप अंधेरा, जहां तक आपको नजर जाएगी एक लाइट आपको नजर नहीं आएगी. हाँ, इक्का दुक्का गाड़ियों की आती जाती हेडलाइट से आपको एहसास होगा कि बहुत तेज विंड स्पीड वहां बहुत ज्यादा लग रही है, और कुछ वहां पर जो छत के हिस्से हैं गिरते हुए एटलीस्ट आवाज ऐसी आ रही है. आप सुरक्षित जगह पर चले जाइए, बी सेफ, बैटरी कंजर्व करिए, क्योंकि कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं है और कहीं पर भी इस वक्त बिजली नहीं है. बिजली स्टेट ने खुद बंद करी है, so that there is no danger in case uprooting of electricity poles take place. That is the live report coming in from Kutch, close to Jakhau port, and Rakesh Pandey reporting from there. Let me now go across to Siddharth Pandya, who's in Mandavi. And Siddharth, आप जहां पर हैं वहां क्या दिख रहा है? मांडवी में इस वक्त क्या नजारा है? The scenes which we are seeing here, I mean, you can't even imagine the kind of destruction which has been caused here outside the Mandvi. We are standing just near to the outside the area of the city area. You can see behind me, if you're able to see the destruction which has taken place. You know, this is the aftermath of the. You can see the wind
gustling winds blowing at more than 80 kilometers per hour. That is what the scenes here are outside the city here. But again, the rain has started off as we are talking. Rains has again, thunderstorms has started. The rains has again begun, and this whole of the area has been totally destructed. Behind me, you could see the tea vendor shop, which has been totally decimated by the strong winds. I cannot go further because we have some network issues. If I just go further, I'll be losing on my network. So I'm trying to get the glimpse and sense of the situation from standing over here. You can just see what has happened, the total destruction, and the total calculation of the loss will be started tomorrow onwards. As you rightly mentioned, the electricity has been cut off in whole of the Mandavi area and whole of the Kutch. That is what we are getting through our sources, just to take preventive actions. The government doesn't want to leave any stone unturned. They want to make sure that the zero casualty plan, which was the aim of the government few days back when they came to know about Biparjoy, they are making sure that the zero casualty plan is taken forward. Up till now, only 3 or 4 of the individuals have been injured. Nothing more has happened, fortunately, so that is a good news up till now. But the destruction has had on a very big and large scale. More than 750 poles, electric poles, have gone down only in Dwarka. And if we talk about whole of Gujarat, more than 4,000 poles have been gone down. That is what we are getting through our sources from right across Gujarat, especially in the 8 ultra-sensitive districts. So that tells you the gravity of the situation. That tells you how Biparjoy has definitely decimated all the poles. Other than that, talking about 590 electricity team, PGVCL teams, that is the state government electricity board teams, have been stationed right across these 8 areas, in Kutch, in Jamnagar, in Jafrabad, all these areas, low-lying areas also, they are there to make sure if any pole falls down, the repairing system starts off again. So, the preventive measures have been taken by the government now. Please, Siddharth, preventive measures have been taken, and I would advise you, I would implore that please move to a safe location, be careful. Important to report, important to keep our viewers informed, but also important to be absolutely safe in a situation of this kind. Clearly, hats off to our reporting team for reporting from ground zero and in these challenging circumstances. Thank you, Siddharth. Thank you, Rakesh, for joining me on the News Hour. Ladies and gentlemen, before I go on to our experts, I also want to show you a report that Jyoti Mishra just filed for me about 3 minutes ago. Her battery has just died. She was going across to an area where an electricity pole fell down just about 3 minutes ago. Let's just catch up with that report that she's with great difficulty been able to send us. Let's watch. मैम देखिए, हम इस वक्त सड़कों पर उतरे हैं द्वारका में तूफान के बाद के मंजर का एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। यहाँ पर लंबा चौड़ा काफिला गाड़ियों का मौजूद है। ऐसे आशंका हम जता रहे हैं कि शायद कोई अनहोनी हुई होगी। और क्या कुछ अपडेट्स हैं जानने के लिए आपको थोड़ा सा आगे लिए चलते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि एक बहुत बड़ा बिजली का जो खंभा है वो पूरी तरह से यहाँ पर गिर गया है। और ऐसे में आप देखिए कि नीली बत्तियों का ये पूरा काफिला गाड़ियों का यहाँ खड़ा नजर आ रहा है। अचानक तूफान के इस बीचों बीच आखिर क्या हुआ है इधर तूफान के बाद, ये जानने के लिए थोड़ा सा और आगे चलेंगे। मैं देख पा रही हूँ गृह मंत्री हर्ष सांघवी यहाँ पर मौजूद है। नीली और लाल बत्तियों की गाड़ियों का काफिला यहाँ पर मौजूद है और हवाएं बहुत तेज रफ्तार से चल रही है। ये देखिए, बिजली की जो पूरी तारें हैं ये आपस में ये पूरी आपस में फंसी हुई है और ये तार पूरी तरीके से गिर चुका है। ये खंभा पूरी तरीके से गिर चुका है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि गृह मंत्री वहां पर मौजूद हैं, हर्ष सांघवी, और वो 750 ऐसे बिजली के खंभे हैं जो गिरे हैं और अभी जो तूफान है वो वापस से बहुत ज्यादा रफ्तार पकड़ रहे हैं। ऐसे में जरा उनसे बातचीत करते हैं। क्या हुआ इधर पे कुछ? ओहो, तो देखिए ये हालात यहाँ के, बिजली का ये पूरा खंभा गिर चुका है। पुलिस की टीम, आप लोग एसडीआरएफ से हैं? हाँ, आर्मी से सेना के जवानों को बुलाया गया है। आर्मी के जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी तरीके से देखिए बिजली का ये खंभा यहाँ गिर गया है।
हर्ष सांघवी यहाँ पर है। नहीं सर, मैं ऐसे नहीं छू रही हूँ, हम ध्यान दे रहे हैं। आप भी बारिश में भीग रहे हैं, आपके साथ साथ हम भी हैं। नाविका मैम है हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। उनका सवाल ये है कि क्या अपडेट्स हैं, कितने नुकसान हुआ है। देखिए गृह मंत्री खुद हमें अपडेट दे रहे हैं। देखिए अभी तक देवभूमि द्वारका में कुल मिला के 3 लोग जख्मी हुए, तीनों लोगों की ट्रीटमेंट चल रही है और सब सुरक्षित है। कुल मिला के पूरे देवभूमि द्वारका में 700 जितने बिजली के खंभे गिरे हुए हैं, जिनमें से मैक्सिमम खंभों को हटा लिया गया है। पेड़ काफी गिरे हैं, आप देख रहे हो कितने घंटों से यहाँ पे टीम ऑन साइट काम कर रही है और द्वारका में से सभी जगह से पेड़ भी हटा लिए गए हैं। एक मिनट। हाँ। तो हमारी पूरी जिला प्रशासन की टीम काम पे लगी है और फील्ड पे लगी हुई है। मुख्यमंत्री जी भी इमरजेंसी सेंटर पे से अभी उनसे बात हुई और उन्होंने भी सभी प्रकार की मदद के लिए और टीम भेजने की भी बात की है, लेकिन हम लोग के पास अभी पर्याप्त टीम है और कुल मिला के 7 जितने एनिमल्स की डेथ की खबर आई है, 700 जितने खंभे गिरे हुए हैं, कई पेड़ गिरे हुए हैं, सभी गांव संपर्क में हैं। इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कनेक्ट हमने जानबूझ के किया है सेफ्टी मेजर्स को लेके, और रात भर इसी प्रकार की हवा और बारिश चलती रहेगी। हमारी टीम पूरी फील्ड पे काम पे लगी हुई है। बिल्कुल सर, आप गृह मंत्री होकर खुद सड़कों पर उतरे हैं, थोड़ा सा ऑफिशियल डेटा आया है क्या कि लैंडफॉल गुजर चुका है या अभी उसके आने की संभावना है? तो देखिए हर्ष सांघवी से हम बात कर रहे थे, खुद गृह मंत्री हमें यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरीके से 700 से ज्यादा बिजली के जो पोल्स हैं वो गिरे हैं। इंडियन आर्मी यहाँ पर मौजूद है बड़ी तादाद में, और देखिए किस तरीके से फटाफट यहाँ पर जो बिजली का खंभा गिरा था उसे एक साथ निकालने की कोशिश इन्होंने की है, और बिजली का ये खंभा अभी साइड कर दिया गया है ताकि इसमें किसी भी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना हो, बारिश की वजह से, पानी के बहाव की वजह से कोई खतरा बढ़ ना जाए। 3 लोग घायल हुए हैं, 7 मवेशियों के मौत की खबर है। ये व्यवस्थाओं का ही असर है। आज के इतने बुरे तूफान और मार को झेलने के बावजूद जो नुकसान है वो जिस हिसाब से सोचा जा रहा था वैसा नहीं है, और इसीलिए लोग द्वारकाधीश के शुक्रगुजार होते हैं कि द्वारका में वो हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन देश के ये जवान भी, जिनके आज पूरा देश शुक्रगुजार है कि आज इन जैसे बहादुर सिपाहियों की वजह से लोग ऐसे मुश्किल हालातों का सामना कर लेते हैं। कितनी जगहों से पोल हटाया आप लोगों ने? कुछ बोलेंगे सर? 7 पोल हटाया अभी तक? 7। अच्छा, इतना आंधी तूफान बारिश हो रहा है, दिक्कत तो नहीं हो रही आप लोगों को? नहीं मैडम, पूरा प्रिपेयर्ड है आप लोग? जी प्रिपेयर्ड है हम। Well, that was Jyoti Mishra reporting from Ground Zero with the Home Minister of Gujarat, Harsh Sanghvi, on Ground Zero, literally present there, live, getting pillars and poles of electricity removed. Also stated that he was directly in touch with the Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel, as well as taking the call of cutting off all electricity connections just for safety, and that around 590 electricity poles had virtually fallen to the ground in these areas where Cyclone Biparjoy has made a landfall. Wind speeds you could hear from the live reporting of our crew on the ground. You could hear it in their mic that wind speeds of about 100+ kilometers per hour is what is being witnessed in Kutch, Jakhau, Mandvi, and other areas in coastal Gujarat. Let me go across to the experts joining me on the Newshour tonight. Harjeet Singh, Head of Global Political Strategy, Climate Action Network International. Also joining me is Soumya Datta, ex-advisory board member, UN Climate Technology Center and Network. Also Professor Raghu Murtugude from IIT Bombay and Emeritus Professor of Earth Sciences, UMD. Let me go across to you first, Professor Raghu, and I want to ask you, so far, keeping our fingers crossed, no loss of life has been reported. Is this the early warning signal and the preparedness? Do you think after landfall, how long will it take for the wind speeds to come down and for the areas to recover from this cyclone? This is really a poster child for how global warming is going to affect the cyclones. This is now the longest lasting cyclone in the Arabian Sea. Arabian Sea has been warming, and
Right now, we are lucky on many fronts because the preparations and operations now are so quick, so efficient, no loss of life as of yet. Hopefully, this will continue. And the other big lucky factor is that despite the ocean being so warm, the cyclone didn't sit there and churn on the ocean, in which case it could have dumped meters of rain on land and kept pushing walls of water on, as well as the winds. So it seems to now quickly move on land, finish in a couple of hours. Then it will move towards, Jodhpur and Delhi, Gwalior, somewhere in between. So in many fronts, it will continue to break into pieces, bring a lot of rain and winds along the way, but even down all the way Western Ghats, even into Tamil Nadu, will get a lot of rains, all related to Arabian Sea being so warm, which is directly related to global warming as well. Well, let me get in Mr. Harjeet Singh. How do you see the climate change that has impacted the Arabian Sea, as Professor Raghu said? Are there any other warning signals that we are saying? What do we need to do in order to prepare for disasters of this kind? So far, it's only electricity poles and a few animals who have suffered. But do you think it could get worse before it gets under control? Thank you, Navika, for having me. We knew that disasters are going to be increased because of climate change, the global warming that we have seen in the last few years. In fact, we are right now having a global temperature rise of 1.2 degrees Celsius, and that's what is responsible for increasing frequency and severity of disasters. As you have just heard, there's actually an increase of such cyclones emerging from the Arabian Sea. There's a 50% increase that we have seen, and also 150% rise in severe cyclones in the last few decades. So it's documented, it's proven, and this is already affecting a lot of people. The reality is that it's going to increase further as temperatures rise, and we need to be preparing a lot more. So one good thing is that because of our preparations and early warning systems, we are able to save lives. But what about the loss of property, loss of infrastructure? That takes years to recover. And there are data which says that there's a study, in fact, that says India may lose 3 to 10% of GDP annually by the end of the century. And our poverty rates are going to go up by 3.5% by 2040 due to climate change. So we need to also talk about the economic damage. And there are also non-economic aspects when people, losing their life and health. How are we going to recover? So it's a global problem right now. And countries like India are highly vulnerable to these increased frequency and severity of cyclones and many other climatic disasters. And what we need to do is to invest a lot more into preparation. But then there's a bigger debate. And I must tell you that right now I'm sitting in Germany, where we are having a conference on climate change, where we are wanting rich countries to do more, because countries like India are suffering because of the 150 years of emissions that have been largely caused by the rich countries. So it's a much bigger problem. There are things that we can do locally in terms of preparations, but when it comes to looking at the cause, we have to bring down greenhouse gas emissions. Well, we'll have to wait and watch when the developed world actually gives enough weightage and importance to concerns of the developing countries like India. But Soumya Datta, let me talk about Biparjoy specifically at the moment. Landfall happened a couple of hours ago, expected to go on till midnight. Is that the longest? And do you think are we going to see a worsening of situation? Let me ask it plainly. No, actually, once the landfall happens, the cyclone starts losing its strength. Because one very fundamental thing is all tropical storms, cyclones and same things are called hurricanes, typhoons, they get their energy from the moisture that gets up in the air from the ocean or sea. So once it comes onto the land, landfall is when the center of the eye is touching the coastline. So landfall has happened around 6:30, whatever is the time. So now the cyclone has already started losing energy. So slowly the wind speed will come down because the fuel of the cyclone is the vapor. So it will keep not getting enough fuel of its energy, so it will slow down. But one good thing that has happened, because no cyclone is good for the coastal population, but one good thing that has happened is the cyclone did a landfall
close to the lowest tide point. If you see what is the tide times in Gujarat coast of Kutch, it was around 5:30 to 6. It was the lowest tide. If the cyclone delayed, spent more time on the ocean, and did landfall around 11 or 12, which was also earlier predicted it might happen, then the storm surge. See, wind damage is only one aspect. The heavy rainfall damage is the second aspect, and the third mechanism by which a cyclone damages infrastructure, lives, etc., is the storm surge, the wall of water that is driven by the wind. So if the cyclone did landfall much later, say 10:30, 11, 12, then the storm surge would have been much higher. And if you know I have been in these areas around 9 to 10 times, Mundra, Mandvi, all these areas. The coast there is extremely flat. The intertidal zone is very large. So even a little bit of tidal surge, the storm surge, the water, high-speed water will go far inside and do the damage far inland. Well, so it's a good thing. We're just thanking God for small mercies that it happened when it did, and that it is possibly losing steam. But for the moment, eyes on that coverage, our reporters on the ground bringing all the latest information. Thanking all the three experts on the show. Thank you very much for joining us and giving us an insight into what we are really dealing with in terms of climate change.